खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ये लगता है कि नहीं, बड़ा आपने सवाल जो पूछा है, मुझे तो तब से लगता है जब मैं उस उम्र में था कि फिल्में क्यों नहीं बन रही। ये मेरे लिए बनेगी, ये बड़े होने के बाद तो बाद की बात है। जब मैं बच्चा था मैं तो तब से कह रहा हूँ कि क्यों नहीं बन रही। लेकिन जाहिर है कि ये फिल्में नहीं बनी है और सिनेमा हमारा कमर्शियल लोगों के हाथ में था। इसी वजह से चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना हुई। जब बनाया चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में हम जिस वक्त हम काम कर रहे थे और कई साल काम किया है वहाँ पे भी मुश्किल ये थी कि हमें थिएटर्स नहीं मिलते थे और थिएटर वालों ने भी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो दैट वाज अगेन प्राइवेट बिजनेस और प्राइवेट हाथों। और ऐसे कोई इस तरह के थिएटर भी नहीं थे कि जहाँ बच्चों को खास तौर पर इन्वाइट किया जाए या बुलाया जाए या बच्चे पेरेंट्स के साथ आके सीखें। आज मुझे इतना याद है, एक एरोज नाम का थिएटर है जिसे ब्रिटानिया बिस्किट जो प्रोग्राम किया करते थे, और बस वो एक संडे भी मॉर्निंग शो एक हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर संडे। एंड दिस इज हाउ इट वाज ट्रीटेड in the children's cinema. Children Film Society also have never been able to work it out all these years, in spite of half a century gone, more than half a century. Children Film Society has never been able to become independent cinema body, which, if I may have the permission to say so, it is only during one period of Jaya, which is for Jaya Bhaduri, that she made it feasible and got the time on the television, the morning time for children, every day, Sunday, special time for children, and Children Film Society had almost become independent money-wise. And subsidy लेने से इनकार किया हो कभी Children Film Society ने, I think that's the only time which I remember it had happened. One Mr. T. Narasimhan, he was the man who managed the entire business. He was a businessman. The moment there was a businessman and there was a professional people in it, it had started working hardly for 1 or 2 years or 3 years, and again grabbed away by the commercial setup of our cinema in the society by the businessman. It was taken away once again, and it never happened once again with this. I think it needs some different sort of setup and a planner, and differently commercially planned, that Children Film Society should work for it. Otherwise, this is only filling up the, I think, eyewash by the government. Government has to show that हम कर रहे हैं. And most of the adventurists came in, जिन्हें हाथ साफ करना था, जो इंस्टीट्यूट से निकलते थे, कहते थे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में चलते हैं ना यार, हाथ साफ हो गया. And I have heard all this. I am on an age now that I can say without getting the कि आप पत्थर मारे उससे पहले मैं अब कह सकता हूँ. And if you look into it,
Now, why blame cinema only for children? What have we done for children? Children literature का क्या है? Children books के. Except that I admire the Curry Tail family, the way they have carried it on in spite of all the handicaps. जिस तरह से विश्वनाथ जी को मैं जानता हूँ कि जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की है और जिस तरह से ये लड़ते रहे हैं कि मुझे अपना फील्ड नहीं छोड़ना है, मुझे अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, मुझे बच्चों के लिए काम करना है, एजुकेशन का काम करना है, बच्चों के एजुकेशन का काम करना है। कई स्ट्रगल से निकले, किस तरह की स्ट्रगल से निकले हैं, इनके राइट्स ले लिए गए, छीन लिए गए, फिर वापस लिए उन्होंने, और इस तरह से he has been carrying on. Hats off to people and a family like that who have worked out for children. It's a commitment with self. It's a commitment, it's a moral कहूँ या क्या, it's a commitment with yourself. इसके लिए कोई हिसाब किताब लगाने से कुछ नहीं होगा. And I think somewhere we miss this, which is not happening. Cinema, literature, and then come look at things which are happening in the society. Which kind of respect are you giving to children? Which kind of love are you giving to children? उनकी एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्या किया? I'm come to think of it, it's a commitment, moral, soul, जो भी कहिए वो है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं. As a nation नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी एक सोसाइटी की जरूरत नहीं. I'm sorry, I've spoken more than what you asked for, but it all involves to this, and it comes to the same reason. Why there is no cinema, why there is no literature for children, and why there is no music for children, and why don't we have time on television for children? Why can't you use it for that? And that also is not happening. Nothing is being produced here. या तो कोई डब किया हुआ बाहर से सीरियल आ जाते हैं, या वहाँ से अडेप्टेड आ जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी कर देते हैं. And that's all what is happening. अभी बताया गया कि जो भी आपको दिखता है टेलीविजन पे यूजुअली डब्ड रीटेलिंग्स होते हैं फॉरेन सीरियल्स या फॉरेन फिल्म्स के. तो हमारा जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है तो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आई ऑलवेज वंडर्ड कि हम क्यों नहीं अपने स्टोरीज बता रहे हैं इन आवर ओन वे विद आवर ओन सेंसिबिलिटीज और अपने बच्चों के लिए. तो दैट इज व्हाट वाज द ट्रिगर टू मेक दिस फिल्म. और मेरा पूरा काम इसी एरिया में रहा है कि टू sort of do and discover things that are around us which are pertinent to our culture, और अपने टाइप का स्टोरी टेलिंग अपने बच्चों के लिए है. और ऑफ कोर्स हाँ, ये बहुत एक लेबर इंटेंसिव काम है एनिमेशन करना, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग उसको बैक करते हैं. बहुत कम फंडिंग है इसके लिए, तो जो भी है बहुत लिमिटेड फंडिंग है, पर उसी में कुछ अच्छा बन सकता है, यू नो. वो भी हमें एक प्रूव करना था इस फिल्म के थ्रू. और जो भी इस फिल्म में इन्वॉल्व है उन्होंने पूरा स्ट्रेंथ उसमें डाला है, डिस्पाइट नोइंग कि हाँ इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, इसमें पैसे कम है, या यू नो इट्स टफ इन द सर्कमस्टेंसेस, ये रिलीज भी करना मुश्किल ही है. तो इन सब डिसएडवांटेजेस को लेके फिर भी सबने यू नो वी पुट आवर माइट बिहाइंड इट, क्योंकि वी आर वेरी कन्विंस कि ये अच्छा प्रोडक्ट है बच्चों के लिए या जनरल ऑडियंस के लिए. और यू नो इट्स ऑल्सो टू प्रूव कि हमारे यहाँ ये सब हो सकता है. वी डोंट ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन यू नो आउटसोर्सिंग आवर स्टोरी टेलिंग और जस्ट बोरोइंग फ्रॉम द वेस्ट. And we have enough resources here in terms of manpower, in terms of our intellectual content. Even if we don't have too many financial resources, we still do have a lot of other strength. तो ये of course ये तो prove करना था, पर ये viable भी होना चाहिए, वो तो बहुत important है. नहीं तो ये आगे कैसी फिल्म बनाएंगे, you know, next फिल्म कैसे बना सकते हैं.